Good morning, students. Today in PALS Easy Commerce, we are starting module 3, and in that we are doing the Indian financial system. Let us see ये क्या है, मतलब what is there and what are we going to study. पहले ये स्टडी करते हैं कि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके के होते हैं, एक मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट. अभी मनी मार्केट इज जनरली शॉर्ट टर्म फंड्स अप टू 1 year. दैट इज द एक क्या बोलते हैं, एक जनरलाइज डेफिनेशन है या एक जनरलाइज अंडरस्टैंडिंग है. और कैपिटल मार्केट्स क्या है? इट इज लॉन्ग टर्म फंड्स एटलीस्ट मोर देन अ ईयर. ओके, अभी एवरीथिंग टू डू विद मनी मार्केट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. तो इट इज अ मार्केट, मनी मार्केट क्या है? इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 year. The funds generated from money market can be utilized for working needs of the issuer or the borrower. Are you understanding? अभी मनी मार्केट में दो तरीके हैं. One is unorganized money market and one is organized money market. Unorganized money market, there are no standardized rules and regulations. मुझे ब्याज पे 18% भी मिल सकते हैं, मुझे ब्याज पे मुझे वो पेपर वर्क की जरूरत नहीं है. They have their gundas and all, they know how to extort that money also. Now, who are there in the, they don't have any kind of those RBI regulations relating the rate of interest, money margin. There are many people who ब्याज पे ही काम करते हैं, इसको पैसे देते हैं, उसको पैसे देते हैं, लेकिन उनमें ना कोई पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन वर्क ज्यादा नहीं होता है, लेकिन पैसा जितना चाहो उतना मिल जाएगा. बट दे हैव अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? मनी लेंडर्स, शिट फंड्स, non-banking finance companies, individuals and others. So all of that comes under the unorganized money market. उसके बाद I have is the organized money market. So organized money market में क्या होता है? Standardized rules, regulations. The participants in organized money market include RBI, banks, corporates, non-banking financial companies. All of that comes under the organized money market. पहला है ट्रेजरी बिल्स. सो व्हाट इज देयर इन द ट्रेजरी बिल्स? सो यहाँ पे ऑन बिहाफ ऑफ द इंडिया टू रेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू रेज शॉर्ट टर्म फंड्स, उसके लिए आई कैन हैव इज द ट्रेजरी बिल्स. आर यू अंडरस्टैंडिंग? उसके बाद आई हैव इज द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. और सॉरी, ये ट्रेजरी बिल्स 91 डेज के हो सकते हैं, 182 डेज के हो सकते हैं या 364 डेज के हो सकते हैं. उसके बाद I have is certificate of deposits. So it enables the commercial banks and FIs to raise short-term funds from the markets for working the capital needs. So that is the certificate of deposit. They should be for a minimum, the minimum amount of CD should be of 1 lakh. Are you understanding? The minimum deposit that should be accepted from a single subscriber should not be, it should be multiples of 1 lakh. उसके बाद commercial paper, unsecured promissory notes by companies listed on the stock exchange to meet working capital needs. So it is issued at discount and repaid at its face values. Now, for CP, it is issued in the denomination of 5 lakhs and multiples of 5 lakhs therefore. So, I have everything जो भी ये मेरा commercial papers है, वो 5 lakhs के multiples में ही आएंगे. उसके बाद तो जो CDs था वो 1 lakh था. जो CP है वो इशू होते हैं 5 lakhs के डिनोमिनेशन में. उसके बाद I have is a call money market. This is a interbank call money market. It is also known as interbank. Lending and borrowing on money on a daily basis. The one-day loans can be renewed on the next day. So कभी-कभी वो क्या होता है? The banks are in short of liquidity. The supply comes from those commercial banks with excess funds and FIs. तो वहाँ एक बैंक और दूसरे बैंक के लिए वो one day loan, ये that is all a part of the call money market. Then I have is the commercial bill market. Commercial bill market क्या है? The draw of the bill can get the bills discounted with commercial banks, and the commercial banks can get the bills rediscounted with FIs. So ये rediscounting सकते हैं, like a bill of exchange. So I hope students, with this the money market has got easier. Now I'm moving to the capital market.
तो कैपिटल मार्केट क्या है? इट डील्स विद लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज which have a maturity period of over 1 year. The long-term securities enable the firms or issuers to purchase fixed assets. तो पहला क्या है? Corporate securities market. Corporate securities market में they provide long-term funds to companies. तो उसमें दो आता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट क्या होता है? न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटीज. एग्जाम्पल, मैं हूँ लैक्मे कंपनी, ओके, और लैक्मे कंपनी ऑलरेडी पीपल नो मी, लाइक आई हैव मेड अ वेरी गुड नेम इन द ब्यूटी मार्केट, ओके, बट नाउ आई वांट टू गेट अप इनटू कुकिंग, मतलब ये कुकिंग वेयर अप्लायंसेस और वो सब. तो अभी मैंने नया आईपीओ निकाला है. सो ये जो है ना प्राइमरी मार्केट, that is when the existing company or a new company has come up with new shares that are to be sold in the market. तो वो कंपनी का वो प्राइमरी वेंचर है. So it is a market for new issue of securities. It deals with the debt or equity backed securities which are issued to the public for the first time. Therefore it is called as new issue market. अभी ये जो है इशू मैं किस तरीके से मंगवा सकती हूँ? पहला तो प्रोस्पेक्टस. मोस्ट ऑफ द पीपल दे डू इज एक प्रोस्पेक्टस, और वो सब शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक या उसके दूसरे कंपनी के, उनको ऐसे बोलेंगे कि आई एम कमिंग विद दिस इन केस यू वांट टू इन्वेस्ट, या ऐसे वो न्यूज़पेपर में जाहिर करेंगे, और whoever wants to do it they can just go ahead with that. उसके बाद इज राइट इशू, रेजिंग फर्दर फंड्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उनको बोलेंगे कि यू कैन ऑल्सो इन्वेस्ट इन दिस वगैरह. देन द अदर पॉइंट in the primary market, the other way is book building. तो ये क्या होता है? रेजिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम इन्वेस्टर्स whereby the investors are required to quote the number of securities and the price at which the securities would be purchased. अच्छा, मैं 100 रुपया देने को तैयार हूँ, या whatever for one share. So I want at least 1,000 shares, or I want at least 100 shares. Offer for sale. So this involves offering of securities to the intermediaries like issue houses or merchants or bankers or investment bankers. The issuing house sells the securities to public at a higher price than the price paid to the company. और उसके बाद I have is a placement method. तो placement method में क्या है? The issue house or broker sells the shares to their own clients rather than on their members or public. मतलब वो लोग क्या करते हैं, अपने अपने क्या बोलते, करीबी रिश्तेदारों, ये वो एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही बेच देते हैं. ये पूरा था प्राइमरी मार्केट. अभी सेकेंडरी मार्केट. अभी आप लोग को भैया वो स्टॉक मार्केट इतना बड़ा है, मैंने इतना पैसा कमाया. सो बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस ऑन द लिस्टेड, मतलब स्टॉक एक्सचेंज सिक्योरिटी, बीएससी, एनएससी, ये सब लिस्टेड प्लेसेस है where your shares जो डीमैट फॉर्म में है can be sold. The trading transactions of the secondary market are done through the medium of stock exchange. So example, BSE एक stock exchange है, NSE एक stock exchange है. So the main purpose of the secondary market is to create liquidity in securities. तो उसमें क्या है? Facilitates trading in securities. तो उसमें क्या है कि the secondary market facilitates trading in securities. Generally the trading of securities takes place in the stock market. Facilitates primary market. They do not make it easier for companies and governments to raise funds on the primary market. They can be traded number of times. For example, on the secondary market, मैंने आज buy किया, फिर sell किया, फिर वापस ये किया, फिर वापस, I can keep doing it. So in the secondary market, I can do is facilitates trading in securities, facilitates the primary market, and a security can be traded a n number of times. So रोज का रोज जो buying and selling होता है, it's not a new company. You know that markets नीचे आया, you started buying it, markets ऊपर गया, you started selling it. So that is a secondary market. उसके बाद I have is the government security market. ये क्या है? इसको gilt edge securities भी बोलते हैं. Gilt edge मतलब of the best quality. This is because the government securities are free
from any kind of risk of default or what do you call, and they are highly liquid. So इसमें the market deals with the securities such as the bonds, that are there, and other securities issued by the central government and the state government. इसमें क्या होता है, all India institutions like IFCI, state financial institutions like SFCs, SIDCs, and other government bodies come under this gilt-edged securities. उसके बाद so these securities, they carry a rate of interest called coupon rate, and the securities are normally issued with different maturity dates. उसके बाद I have is a long-term loans. Banks and FIs provide long-term loans to firms. They can be of fixed assets, especially at the time of expansion and modernization. Term loans market, mortgage market, मतलब term loans क्या होता है? Banks and financial institutions like State Financial Corporation, SIDBI, Exim Bank, ये सब term loans देती है. The maturity period of term loans is 1 year or more. Mortgage market में क्या होता है? Transfer of interest in a specific immovable property to the lender of the loan, उसको mortgage करते हैं, कि ठीक है, एक प्रॉपर्टी अभी आप mortgage किया, जब मैं ज्यादा कमाऊंगा या मुझे कुछ है, मैंने मार्केट में पैसा डाला है, फिर मैं वापस वो प्रॉफिट डाल के वो मेरा प्रॉपर्टी वापस मैं ले लूंगा. जनरली जिसके पास सेकंड हाउसेस होते हैं वो सब ये करते हैं. फिर फाइनेंशियल गारंटी मार्केट, तो इसमें क्या है, apart from loans, financial institutions and banks provide financial guarantee on behalf of their clients to third parties. Guarantee on behalf of its client to third party. If the client fails to pay penalty, the bank or FI issuing guarantee is held liable by a third party. So that is known as your, these things. So I hope students, now this entire concept has become very simple. And just to make it as a bird's eye view, फाइनेंशियल मार्केट इज इनटू मनी मार्केट. मनी मार्केट के दो मेन टाइप्स है, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड. कैपिटल मार्केट के तीन टाइप्स है, कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट, government security market, and term loans. Thank you, students. I hope this concept has become very, very simple now.